अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ और वो है अबाउट अ डिफ़िकल्टी दैट मोस्ट स्टूडेंट्स फेसेस ड्यूरिंग द लर्निंग ऑफ हिस्ट्री डेट्स एंड अबाउट द इवेंट्स। जैसे आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको याद करना, मेमोराइज़ करना बिल्कुल मुश्किल है। ज्योग्राफी के लिए तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसको ड्राई सब्जेक्ट समझते हैं, और हिस्ट्री में डेट्स और इवेंट्स को याद करना बहुत मुश्किल होता है फ्रॉम द बुक। तो उसकी मैं आपको 3 जो की टिप्स हैं याद करने की, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट टिप है वो ये है कि व्हेन यू आर लिसनिंग एनी लेक्चर यू आर नॉट गेटिंग इट, तो उसका सबसे पहले हल ये हो सकता है कि आप सबसे पहले जो भी इवेंट आप पढ़ रहे हैं उसकी मूवी देखें। मूवी से ये होता है कि नीचे जो आपकी वो डायलॉग आ रहा होता है उससे आपको उस इवेंट की चीज़ें मेमोराइज़ हो रही होती हैं। उस मूवी को देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो वॉचिंग मूवीज़ इज़ द की फैक्ट। ठीक है, इट्स अ की फैक्ट टू मेमोराइज द डेट्स एंड द इवेंट्स। ठीक, ओके। सेकेंड थिंग इज़ अबाउट मेकिंग कनेक्शंस मीन्स यानी व्हेन यू आर लर्निंग फ्रॉम द बुक, make it like in a table of content. For example, if you are learning the event of Mohenjo-daro, Harappa and Indus Valley civilization, you are making 3 circles, and making the 3 circles you can make a table that how that making the, for example, there is a book and there is a register. You are memorizing, like for example Mohenjo-daro in 8085 Mohenjo-daro there was that, and you are making a table of that and you are memorizing it. Connection with books with the facts makes your learning easier and capable, so that you can learn the things very easy. Thirdly, make flashcards means make, whenever you are learning a topic sequence wise, make the flashcards of it. In a classroom you can make it. It will be very presentable. ठीक है, you make it the flashcards, write the events in a sequence way and present it on your classrooms, so that you can learn it very nicely. Presentations is very important. Fourth thing, when you are learning any chapter from the book, make the sticky notes on that, and from reading all the chapter, what you memorize, what you learn, the key facts about the topic, write it on that note, so that it will make you easier. You got it? I tell you 4 things, three things are main important. First is to watch movies, second is to learning and making facts, and the third is about to make flashcards. These are the 3 facts, and the fourth which I have tell you, this is not in the end. For example, you are reading a book and you are writing it. By seeing this all that, you can learn the history very easily. And it is same as a fact for the geography. In the geography, the most important thing is same. You are learning anything, you can watch the video of that topic, then memorize it, write it on the notepad one by one, the points, and make the topic facts about it. Facts means yani memorize it in a sequence way, so that you can learn it very quickly, and watch the video, make a table of contents, so that it will make you easier to understand. Because in geography and history, the most important thing is about to watch the movie and to memorize the key facts, what are the interrelations of the topic. ठीक है, watching movies, making flashcards, writing the important points, this makes the interconnection of the both the subjects and makes you make your learning and understanding easy. Because whenever you watch the movie of that, these are the practical subjects. Okay, when you are watching something video and all that, you can learn the things very easily and you can memorize it, the dates and all that. Thank you.